Suraj Singh, Civil Engineer, Bharat. Daily talk in connection with general affairs, that is regarding our nation Bharat and regarding other nations. Wherever there is some problem, political problem or other problem, including whatever country in this world. Starting with my country, Bharat, India, big constitution, reliable constitution, very large public, 140 crore people. 1 crore is 10 million, 1400 million people in this country. 90 crores means 900 million votes in this country. And we are very large economy, very big economy, very technocrat country, educated people, high profile farmers, and quantum of farmers say 50% and remaining people 50%. We have various fundamental rights enshrined to us, given to us by our constitution, by our society. And we have preambles and 395 articles in our constitutions. And preambles gives a lot. We call ourselves in a statement, and that statement is, we people of this country called Bharat constitutes ourselves into a nation which would be based on principles of sovereignty, socialism, secularism, democracy, and republic status, which would secure to its people various rights like rights to justice in every respect, rights to equality in every respect, and right to freedom. Means all rights, whatever liberty you can say, you'll get all rights, and all these compositions, all these parameters can say privileges, rights shall take you to establishment of brotherhood, fraternity all over our country that is called Bharat, India. And we shall grow on scientific basis, abide by constitution on principle basis, and move this country as a dynamic part, brilliant part of whole world. A part that is based on diversity, a nation that is based on diversity of languages, diversity of religions, diversity of sects, and diversities of so many other considerations, cultures, values, norms, which is also mandated by duties of every citizen, which must be complied with, and their duty is abide by constitution, national honors, national anthem, and scientific and research requirement, engineering requirement, social requirement, faith requirement. And wherever we move further, we move based on reasons, logics, and not on blind faith, not on assumptions, but on reasons, on scientific lead. And we have to use our resources according to optimum needs and requirements so that we move further to take this country to highest levels and have a pride in ourselves that we are dynamic citizens, we are dedicated and devoted citizens of Bharat, India, that has been given to us as unit body of this 140 or 40, 100 million people of this country. But question arises, what is behind all this? We have sovereignty, okay, that's one thing, means everybody is everybody. Everybody is king and everybody is whatever you call it, and republic also same. It says that you are honor of this country. No king is honor of this country, and no other ruler is honor of this country. You are king unto yourself, and you are sovereign unto yourself. You are your own God, and is also authenticated by our national anthem, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hoye, Adhinayak Jai Hoye, Bharat Bhagya Vidhata, Bharat Bhagya Vidhata, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hoye, Bharat Bhagya Vidhata, means people of this country are leaders of this country. Each and every citizen of this country is leader of this country, and this country which is called Bharat. And these people are responsible to fix their own destinies of luck, and that is what this line says. Because I am my own writer of my fate, my future, my present, and everything.
I am responsible for that. And we as collective body of 140 crores people, 1400 million people are responsible, are obliged to write ourselves what we want to see our destiny as. That is what it is all about. We have to understand this very clearly. And how it is based upon? It is based upon political representation. The political is not a constitutional word. We can say public representation. We can say people's representation to be, you can say, deployed onto our legislative bodies, our governments. That is called public representation. Though it's not given in constitution, it is elsewhere statutorily defined. People's representative. And these people's representatives are required because we all cannot sit in parliament, or all state people cannot sit in legislative assemblies, and that's a representation given to certain people so that each area, each constituency is represented according to population. And that's very important because this elected body, this elected constituency, means those voters who constitute or in one constituency is defined as the elected body, and this body elects their representative who are authenticated as people's representative, and they represent that constituency in parliament, Lok Sabha, as well as states assemblies. This is what our constitution says. It does not say anything. If you go to Article 81A, it clearly defines mandates that elected of this voters of this constituency, very geographical constituency, shall elect one Lok Sabha MP and constitute Lok Sabha by direct election, by direct vote. Vote, V-O-T-E, vote, which is right to decide whom you want, which person you want to go to represent you in either Lok Sabha or in House of State. That is what the fine says. And there's another one, that's executive government, which is under president of this country, president, head of government. President is defined head of government, responsible for government, and council of ministers is defined as a body to advise president to do his work, and without advice, president is not authorized to work. This is 2 points we have to consider. Prime Minister is located at head of council of ministers, and voters are located to constitute Lok Sabha, not government. There is a difference. Voters, every citizen is voter. Citizen means who has reliable eligibility, means 21 to 18 years of age, sound mind, and he can be enrolled as voter, and we 90 crore people currently in 2019 are enrolled as voters. Voters means you have to vote on your own, you are free to vote, you are free to vote to whomever contested candidates you desire, or you can reject each and every one. This is power of vote, and this power is not new. This power has been enshrined within our constitution since beginning of constitution 1950. And we are very pride, we're having pride of that. We all are proud that we have such power. Yes, we have power. We have power so to do to vote to someone, but we have to evaluate ourselves. It's now more than 70 years. We should not evaluate to think. Should we not evaluate what we have to achieve? We have achieved this by this provision of Article 81 in Constitution, or Executive Article 74 in Constitution, where Council of Ministers is located under Union Government. Both points we have to understand because both are linked one. Just like preambles and duties of the citizens are linked one, similarly, Constitution of Lok Sabha as well as Council of Ministers are linked together. They are not parallel, they are linked together. Just imagine. Vote means vote to elect public representative. We are confused with this combination of Constitution of Lok Sabha and Council of Ministers. Both are interlinked, not merged with each other. We have to understand where do we stand, where do our votes stand, what we are required to do. We all remain confused because we have not analyzed our constitution, we have not gone through that, and in general, we people of this country do not take any interest in understanding what we are, what our constitutional duties and constitutional rights, and we keep our eyes closed
our minds closed because we are so big people. We are too busy all time and we don't have time to study all this. Though we are responsible for this, we claim that democracy exists in this country. Yes, democracy exists, but before democracy existed, our democracy is befooled. We are befooling democracy and democracy befooling us. There is a two relation. We are befooling because we are not interested in understanding our constitution. And those people who are public representatives, they know it very well. They have understood our psychology that my country people are very great people. They are not interested in knowing what should be done and what should not be done. And they are just depending upon what leaders say, political or constitutional people say, you can do this way. Very easy. They know very well because they themselves don't know constitution. So practice is different and definition is different. You can say definition one thing and practice other thing. We people, though we are educated, we are very well, you can say graduates and postgraduates and professional engineers and doctors and all that, but we don't have time. We are short of time to know our present and future and how to rule this country. We are depending upon those people who can befool us. All people, I'm saying all political leaders, all these political shops, I can say these political shops, Congress, BJP, all these are commercial malls, political commercial malls. Now I can openly see each party because they are also not interested to tell people what's right. Reporters are not telling to people what's right because reporters and journalists and television because they themselves do not take any interest in telling people what is required. Because everybody is not expected to go through the constitution of this country because it's a lengthy document and people are not interested in. They just know, oh, my duty is to vote and I'll vote and that's all. End of game. And of actually game starts at end of game because end of game, this game is designed by certain people only, not by public, and public will take another 500 years, I think, to understand what constitution is. By that time this question may not be there. We are not even, you can say, serious to know that. You talk to someone, they will laugh on that, they will smile on that. You talk to a graduate, you talk to a student, you talk to anyone, they will not care about this. For them it is just a document for sake of document, and they know they have to elect either prime minister, they have to elect someone else, or BJP or Congress. These political shops, they have to elect, they have to elect government, they say that one. They do not understand who is to be elected by our votes. Our vote is very powerful if only we understand. But we are not understanding our vote. That is the problem with our society. Our country is going to be corrupted. Why? Because of this. Our system is falling because of this. Our leaders are enjoying because of this. This is a real root cause of our problems in this country. There is no other cause. No other cause, believe me. If we understand this value of vote, all will be set right. Institutions, judiciary will be set right, legislature will be set right, and executives and president, of course, will be set right. But we do not regard our vote. We just take it as an exercise, as a festival, nonsense festival. Vote is not festival. It's not part of festival. It is part of responsibility. It's part of obligation. It's a question. It's a course of making my future of this country. But we are taking utsav, festival. Our full prime minister says it is festival. If it is festival, then I'm sorry to say you are befooling country. And if people are accepting the festival, you are also being fooled and you are not understanding. Festival is imagination. Festival is just, you can say, enjoying self. Vote is not to be enjoyed with. If somebody says it's festival, I took him. It's a responsibility. It's the future of generations to come, and it is present future of our generation. Why don't you realize that? It's simply stealing in or buttoning in. No. Vote means it's my right out of this constitution, which my right I am giving to one man. Because I cannot go to that, everybody cannot go to that. That man or public representative has to serve me as a part of electorate of my constituency. If that person cannot understand this, my leg is there to kick him out, or my stick is there to kick him out. This is what is. But no, we cannot understand this. We can understand those robbing political shops. It may be Congress, it may be BJP, or whatever it is. We are befooled by prime minister candidate, we are befooled by minister's candidate, and we are befooled by everybody.
Bharat Sarkar, Government India. I am not going to elect Government of India. Government of India shall be elected by automatic system. And that system is working. But we are not understanding. System is still working. But we are not understanding. All system is working except voting system. Prime Minister is working in this way. Council of Ministers is automatically born out, and you can say President is born out by election, Vice President born out of election, and they are born out because we our vote bears them out. Our vote, again, I say, it's the root of tree. The all branches are there, trunks are there, and fruits are there, and leaves are there, everything is there. Except my vote, which is in root, which is root of tree. I am watering in, sun is giving its rays, it is getting synchronized, it's giving, you can say, photosynthesis effect, it's giving oxygen effect, it's giving carbon dioxide and oxygen both times in the night, and we are not understanding that I am root of this tree. I cannot understand that. I am giving, I'm selling my votes. They're paying me emotions. They're paying me nationality. They're paying me patriotism. They're paying me 15 lakhs. They're paying me, you can say, 2 crore jobs. They're paying me, you can say, field. They're paying me free water, free electricity, free this and free that. Means I am just buying my votes. I'm selling them and they're my votes. So freely they are buying my votes, they are not to pay anything. But they say, we'll give you this much. We have transformed our votes into a market, in an imaginary market, imaginary, completely hypothetical communication market, and we are just so greedy. We think this vote shall give us this. Just imagine. This is a very significant talk I'm making. Your vote is a commodity, an equivalent commodity, give it to them, and in exchange get something on promises based, not on reality based. We know no political person, no party can get us what they say. That's impossible. It is evidently impossible. They just befool us. Even if suppose they pay to us, they cannot pay to us from their pockets. They will pay us from our taxes only. So they are not in any position to pay to us whatever they say. They just befool everybody. And water is so great in our country that he just takes everything for granted. Now we take everything for granted. Okay, we think that we are we are going to bring up this leader, this kid, this PM is our son. We think like, oh, it's my family, and I should assist him. Yes, we are so emotionally made, sentimentally organized that they can take every soul from us by using sentiments, and we are flowed, we are swayed, we are swayed in whatever direction these political shops intend us to go into with them, and we accept that. Again, I am saying vote is vote. It is your own choice. It is your own will. It is your way. It makes your presence. It makes your future. It is for you. And these leaders are enjoying unknown profession of, you can say, public representation politics, and they never care for anything because this is last like they have, because this gives them freedom, complete freedom to them. It secures them for everything. It gives them everything without having any formal qualification of education, or without having any hard working or excavation or doing something like that. They are just enjoying life in this formula which is used by them on us. This formula is beautiful people speak lies, give false promises, and tell them you are their God. And we start chanting their names. Indra was India once. Now Modi is Modi, Modi, Modi is God. And such a type of foolishness we people are enjoying. We don't care for what should be done, what should not be done. And until we learn this, we apply that, 70 years have gone waste. We 70 years failed to teach us what does vote mean. There is every justification. These political parties have scrapped whole system. Meaning of vote has gone, and public can never understand, because not of that they are not capable, but because they don't want, they don't have any intention to understand that. Everybody is living in his own way. My problem is solved, and that's enough. And that is the reason we are not national oriented. We may call ourselves Bharat Mata Ki Jai, we may call we are patriot,
We may call somebody not patriot. Irrespective of that, we do not understand what is our country, how we should manage this. We forget that we are owners and responsible of this country. That is fact, but we are not caring about that. We are just caring about these rascal politicians. All I would say, a politician in this country means a rascal, a politician in this country means a robber, a politician in this country means liar, a politician in this country means politician in this country is a rapist, a murderer, a legal person who acts in illegal ways, and there is no other definition that can be granted to politicians. This way, this definition is valid. Though it should be different, it should be a person who is sincere, who is devoted to national service, who is honest, you can say, who is dedicated, who lives for people, who dies for people. That should be the real definition. But this definition is not applicable now. Its applicable definition is different that I just explained to you. If you accept that, fine. If you have your own definition, you can use that definition. But for me, there is no meaning of politicians have left now, because politicians what should be scrapped from society. This is a criminal what in fact. A politician is criminal. It should be service, national service, society service. It should be correct. But you serve people, you serve a nation, you serve yourself, and only then you can get achieve something. Achieve something. If you cannot achieve something, you just play in hands of these politicians who can never be yours. They can never be yours because they are only for themselves. And forget these names, personal values of these politicians. No one can be personal because they are can never be personal. It is evident now. We have to make ourselves understand what vote is. Until we make it understandable, we can never win this country, we can never move this country, we can never jump over this country, we can never take this country to higher levels. And until we understand that, we are just illiterate community. Illiterate in sense not because we have certification of universities. It doesn't mean that you have certification of degree, diploma, engineering, medical, everything you have, all professional degrees you have. But question is, your degrees develop your mind, or these degrees don't develop mind. That is a question mark, big question of mark, explanation, exclamation. It is. If you cannot understand, if you cannot analyze, if you cannot grasp what this degree gives you, you cannot your mind based on this education, based on information. This means you could not learn whatever you want required to learn in those degree examinations. You just learn something which you cannot apply. You are confining your mind to certain spectrum which was included in your subjects. You do not want to expand your knowledge. You do want to take more, receive more information from elsewhere, and that is a problem. You are not having any time to just go through few articles which are in constitution, which apply to you directly, which impact your life directly. And how can you say that you are a patriot if you don't have any time to learn them, to understand your status, constitutional status, your statutory status, your voter status, your election status, your people representative status, your Lok Sabha status, your assembly status? You just say that we are not for government, and that's the end of your game. You are not going to form government. You are going to form your country. You are going to form your system. You are going to form your institutions. It's not government alone. You are going to form your own power. Because what is a power? Many times I was told, explained, rewrote, but I think I am wasting my time. Because we as society, we as people of this country are not interested to improve this country, and all those freedom fighters who lost everything during freedom struggle, they were not. I think they were misnomers. They had some you can say wrongs. They were having overconfidence in their generations to come, and they could not anticipate, they could not even foresee what shall these people do. These people feel so careless, so slow in society that they will not think about what value of freedom is, what value of the country is, and that is what we are. We are very bad survivors of those freedom fighters. We should be cursed by them, and maybe where they are sitting in somewhere in the other world, they must be laughing, or they must be feeling sorry for us, what we have left for these sleeping people who do not care for our blood we lost, who do not care for our life we lost on them, of them. Must be that one. I am telling, I am appealing, I am requesting to each and every citizen of India, open your eyes, open your mind, open your conceptual power, read constitution and understand what you should do. Many blame me that I belong to Congress. You can blame to me, no problem. Congress, BJP, I have nothing to do with them. I hate them.
Really telling you, I respected Congress because Congress was not a freedom struggle. But now Congress is a political party. It's a robbing party. Same thing. BJP is super robbing party. They are looting nation, and all parties are same. Recent example is Haryana, which is very criminal act they have done. People wished to vote someone and they sold their vote to someone. Vote you take from one as a support, as a you can say consent, as sanction. You are getting power from those people and you sell them. This is what is happening everywhere. Like Haryana is an example. Is an example. It happened in many other states. Legislators are on sale, member of parliaments are on sale, and sale is sale. This is government construction sale, government constitution sale, clothes on sale, garments on sale. So our legislators are clothes, they are garments, they are waist belts, they are every article that can be sold on sale. So our MPs and MLAs have become articles of sale. Shame on all those member of parliaments and legislative assemblies who have sold their values which was given to them, which was allowed to them by public of this country for certain expectations, and they sold their expectations, they sold their power, and these are such agents and brokers in political system. These are MLAs and MPs, they are all brokers of themselves and public. They voted for removing BJP, and this person who got votes, he sold this to BJP. What a shameless people these are. I should not take name of those, but you know all names. Why to tell names? After all, this is psychology, this is humanity. Is there is nothing left in our system that can be honored? I stopped honoring all these leaders because they expect honors of honorable. I will not call them honorable to anyone because there is no honor left now. Honor is given for work. Honor is given for sanctity. Honor is given for respect. Because honorable, you are not honorable actually. Honorable is a public whose power you are enjoying. MP, MLA, they themselves are not honorable. This title, MP and MLA, is given to them by constitution and by power of public sports. So you are honorable means when you say honorable MP, honorable MLA, we say public is honorable. But you are not respecting public. You are respecting your own, you are respecting criminal parties. So how can you honor them? I cannot honor BJP. I can't call honorable BJP. Hell with it. I cannot call honorable Congress. Hell with it. Why should I say honorable? Who are you? You are just a political shop, nothing else. I have to honor public because public is above all. And honorable people send some power to you. They give some representation you, and you have abused their person's soul and you're a shop. That party is a character shop, and you are an individual shop. So I cannot honor you. And if you are all not honored, top is also not honored. No institution is honored because all are under power of yours. Vote, vote kills everyone, and vote makes everyone. If public understands vote, Supreme Court should set all right automatically. All other institutions set right automatically because democracy works everywhere. This basic principle of our constitution. Even if Supreme Court, it should function democratically, but it's not happening these days. No institution working democratically because everybody is scared of government. Why we are scared? What we have done crime for? We have not done any crime. Why should I scare? I don't understand. Those people who are afraid of doing some wrong, they should be scared. Why should I be scared? I done nothing wrong. Why should I care for Prime Minister? Why should I care of let them do their job? They're all paid. You are not doing any obligation on me as citizen of this country. I should come down head before you. Why? Why cannot bow before you? You are not my God. You are just a person who has been applied to do something, and that's how. Your Supreme Court just fine, do your job. Your Prime Minister do your job. Your Minister do your job. There's no obligation, no ahsan on me. You're paid for that. It's your job. You opted for that. You got it. I didn't go to your home and collect your common. Please have this seat. You yourself applied for this seat. You got it. Application started when you started your application to election commission. I want to be MP. Then those MPs converted you to certain other position. So that's your job. What? Why you have to say you are doing anything specific? You are not doing anything specific. We should know that much first. Every citizen must know this fact. These people are not doing an obligation on their society. It's their job. They are paid for this. That's fine. This is nothing else. We are paying them their taxes, our blood, our sweat, our hard work. We are paying them, and they are working for us. What relation is this? Only relation.
We honor them because they are working for us. That's all. This is general. But if they don't care for us, we have to kick them out. This is our power. Election power, vote power. We have to understand vote like that. What happens now? There are only two concepts. Either you have to elect, this is misconcept, I'm saying, public has misconcept. Either you have to elect prime minister, you think, or you have to elect chief minister, think, or you go for a party basis. You are forgetting your representative who is who is real aspirant for vote. You are voting someone you don't know. Again, I'm telling you, you are voting in darkness. You are voting in darkness. You don't know who's there, where is light source, where is radiation is there. You are just voting, oh, I voted to this party, or I voted for Modi, or I voted for that. This is your understanding, which is absolutely wrong, and this is the only reason that this country is going to hell. Because of this, your tree is not growing properly, your root is wrong. Instead of instead of selecting your real candidate, you are selecting those who are not linked to you, and they know this. So these representatives have become useless for you. These public representatives, people's representative, whom actually should be you vote to, you are not voting to them, you are not even knowing their name, and just vote for sake of voting, and that person who is not there, he gets benefit of that. And that's a real problem in this country. Vote is valuable if you think it is valuable, and vote is not valuable if you don't think it's valuable. If you think just as a formality vote, there is no bugger stupid than you. In that case, I can call you, we are idiotic society, we are a stupid society, all of us, all. I have to vote to one person, not to one institution. My vote should be going to a person whom I prefer to be my representative. That should be basis. But you are voting to Prime Minister who has to do nothing with you. You are voting to Chief Minister who has to do nothing with you. In this, or you are voting to some party who has not at all to do something with you. That is a shop. That is a shop, nothing else. This shop is taking your vote and not giving you anything. Why don't you understand? Until we understand this, we cannot make this country better. We have to understand this. My vote should go to a person whom I like, who is on list and who I like, who is on roll of this candidature. If I don't like that person, I should vote simple. That person I have to see now criminals are elected, rapists are elected, murderers are elected. Why they are elected? Because while voting, you did not take into your consideration character of that person, role of that person for you. You just elect, you voted in the name of Modi or in the name of Congress or in the name of BJP, and that is the root cause of the problem. I should not elect Modi or Rahul. I should not elect BJP or Congress. I should elect person, people's representative, whose name should be known to me, whose CV should be known to me, whose background should be known to me, and who must have been dedicated to me, who must have given commitment to me that I will abide by Constitution as well as I will serve to you. That must be there. So there could be no business, post-election business. I don't want to see any post-election business tormenting voters. There should be nothing like that. It is happening everywhere. There are certain people who are very nice in purchasing power. For example, Bharatiya Janata Party, they can purchase any MLA, they can have power to purchase whatever kind of legislators they can purchase, and these legislators are very well solidified, consolidated on being sold. This means they have not been sold, votes have been sold. They were given confidence by vote and they have votes sold. Vote means what is sold to them? Means they are broker of votes. If my vote is given to someone and that party joins someone else to support who did I, my vote has been transferred there without my permission. Or I was taken for granted that that person whom I voted, that person supported someone else whom I don't like, is that person took my vote for granted as if my vote has got no value at all. This is what is happening, and we are all silently watching that. Oh my God, I didn't vote him, but he has just like happened in Haryana. People didn't vote for BJP, they voted against BJP, but their vote has gone to BJP indirectly. So what purpose, what served for that voter
who voted. For that voter, it's waste. If he had to elect BJP, he could directly give vote to BJP candidate, and that would be final. These people are saying that. But now it's too late. Sparrow has left field, and you just wait for 5 years. You cannot do anything because there's no recalling power. Only thing is, if you want, you can do something against that person personally, but not officially. So थोड़ा मैं हिंदी में बोल दूँ ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाद में शायद इतना याद नहीं रहता जब और बातें शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के लोगों के, अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग खोलिए, अपने दिमाग की चर्बी जो घुसी है उसको निकालिए, अपने दिमाग को एक्टिवेट कीजिए, और एक्टिवेट करने का बहुत जरूरी है इस देश के वर्तमान के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में। चलो वर्तमान तो जैसा हो रहा है, जो निकल गया हाथ से सो कुछ नहीं कर सकते। ये भारत देश बहुत बड़ा है, हमारा संविधान है, हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपने संविधान के नाम से, अपने लोकतंत्र के नाम से, अपने प्रभुसत्ता संपन्न के नाम से, समाजवाद के नाम से, अपने रिपब्लिक होने के नाम से। ये सब बातें खराब मत कीजिए, बहुत बड़ी बातें हैं। हम लोग जिस देश में रहते हैं वो बहुत बड़ा ऊंचा देश है, लंबा चौड़ा देश है, उसके अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं, और ये सब बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़े समाज है, बहुत बड़े इसके अंदर धर्म है, बहुत बड़े इसके अंदर जातिवाद भी है, बहुत बड़े इसके अंदर संस्कृतियां भी हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। हमको जो पावर मिली है संविधान से, कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, हमारा संविधान कोई छोटा मोटा नहीं बनता, संविधान बहुत बड़ा है। लेकिन संविधान का जो पेड़ है, संविधान के पेड़ का जो जड़ है, उस जड़ के अंदर वोटर बसता है, उस जड़ के अंदर वोट बसता है, और वोटर इस देश के एमपी को बनाता है, सांसद को बनाता है, वोटर इस देश के एमएलए को बनाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। हमको गुमराह कर दिया गया है, गलत राह पे डाल दिया गया है। हमें कहा गया कि आपको सरकार चुननी है, हमें कहा गया आपको प्रधानमंत्री चुनना है, हमें कहा जाता है कि आपको चीफ मिनिस्टर चुनना है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी डाली जाती है हमारे अंदर, क्योंकि आपको समझना नहीं चाहिए कि संविधान क्या कहता है। वही चाहते हैं, कोई भी नेता नहीं चाहता कि आप संविधान जाने, कोई भी नेता नहीं चाहता संविधान में क्या लिखा है, कि संविधान क्या कहता है आपको। हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, हम भारत के लोगों ने अपने आप को संविधान दिया, जब से दिया हमने कहा कि हम इस संविधान को अपने आप को देते हैं, हम इसको बनाते हैं, जिसके अंदर यह है कि हम प्रभुसत्ता रहेंगे, हम समाज रहें, समाजवाद रहेंगे, हम यहाँ पे से पंथ निरपेक्ष रहेंगे, हम लोकतांत्रिक रहेंगे, या हम राजस्व में रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे। ये सब बातें तो हटा के रख दी गई, और कह दिया गया दूसरी तरह से कि यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजा है, और आप लोग कुछ नहीं हो, आप जनता हो। आपको क्या कि लात मार के फेंक दिया गया, और आपने हाँ जी हम तो वोटर हैं, वोट देना हमारा काम है, 5 साल बाद आओ वोट लेके जाओ, उसके बाद नमस्ते। आप रोते रहिए और वो हंसते रहे, वो ऐश करते रहे, आप मरते रहिए, आपके पास कुछ नहीं है, और वो ऐश करें। हमारे यहाँ जो लोग हुए सारी जिंदगी ऐश करते रहे, उसके बाद भी वो यही उन्होंने बता के दिया हमको। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में पढ़ने का समय नहीं है, इतने बड़े आदमी है, इतने व्यस्त आदमी है कि हम नहीं जानते संविधान हमारे पास 2-4 घंटे नहीं है पढ़ने के लिए कि हमें संविधान हमारे वोट के बारे में क्या कहता है। चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, सभी के समान है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी इंजीनियर की, डॉक्टर की डिग्रियां, पीएचडी की डिग्रियां, एमएससी एमए की डिग्रियां, सब बेकार है। अगर आप इतनी बात भी नहीं समझते, अगर आपकी डिग्री सिर्फ इसलिए कि मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, मैं रोटी खाता हूँ, सोता हूँ सारी जिंदगी, बस उसी के लिए आप रखेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्योंकि जब तक आपका देश सही है तो आप भी देश को एंजॉय कर सकते हैं, आप भी शक्ति को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका देश को खराब कर दिया जाए, तोड़ फोड़ दिया जाए, इसकी डेमोक्रेसी को गर्दन मरोड़ दी जाए, इसकी सॉवरेनिटी की ऐसी की तैसी कर दी जाए, इसकी सेक्युलरिज्म को फेंक दिया जाए, और इसके लोकतंत्र को लोक भंडार भीड़तंत्र बना दिया जाए, और यहाँ की रिपब्लिक की टांग तोड़ के फेंक दी जाए, क्योंकि यहाँ का रिपब्लिक समझ ले कि मैं ही प्रधानमंत्री रिपब्लिक हूँ, या मैं ही राष्ट्रपति रिपब्लिक हूँ, ये सब बातें फेंक फांक दी जाए, करना चूर कर दिया जाए इनका, तो फिर आप कहाँ खड़े रहेंगे उस देश में। आप अपना हिसाब किताब लगा लीजिए। कहने को आप वोटर है, वोटर का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं नहीं समझता कि वोटर का मतलब रह गया हमारे देश में। वोटर एक खेल है, एक प्लान है, एक पिक्चर है, एक कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सबको याद दिया है उन्होंने, किस लिए दिया है ये हम नहीं समझते। 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हम आज तक नहीं समझे, हमारा सामान्य आदमी नहीं समझा आज तक कि वोट क्यों दिया जाता है, क्या उसका मंजिल क्या है। बस वो ये कहते हैं हमको मोदी को चुनना है, हम राहुल को चुनना है, हमको किसी को और को चुनना था। यहाँ पे आके बात को स्टॉप किया जाता है, रेड लाइन लगा दी जाती है, लाल बत्ती आ जाती है वहां पे। हमें लाल बत्ती हरी बत्ती नहीं रखनी है, हमको समझना होगा कि आखिर वोट का मतलब क्या है। कोई मतदान कह देता है, ये मतदान नहीं मानिए इसको आप, ये आप दान नहीं कर रहे किसी को कुछ। ये एक भ्रम डाला गया आप में कि दान, क्यों दान करूंगा मैं भाई, क्या करूंगा दान। दान अगर किया जाता है, आप याद रखें,
आप किसी को कोई चीज़ दान करते हैं, दान करने के बाद उसके बारे में आप अपने पूछने का हक खो देते हैं, क्योंकि वो स्वामित्व उसको चला जाता है जिसको दान दिया आपने, तो आपका हक खत्म हो जाता है उसके बारे में बात करने का। और यही नेता चाहते हैं कि आप हमसे कोई बात ना करो, हम जो आपको कह दें, हमें मतदान दीजिए, हम आपके भक्त हैं, हम आपसे पैर छू लेते हैं, मत लेके जाएंगे फिर डंडा मारेंगे आपको, मत पूछो हमसे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमने तो कहा था, बस कह दिया था, बात खत्म। ये रिलेशन है हम दोनों का आज की तारीख में। कि नेता अपने आप को ज्यादा समझने लगता है कि मैं मालिक हूँ ये आपका, और आप तो खाली वोटर हो, मेरे 5 साल बताऊंगा, फिर वो फुद्दू बनाऊंगा, बेवकूफ बनाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा। ये कहानी चलती रही और चलती रहेगी। कोई भी सरकारें आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई फर्क नहीं है। कोई ज्यादा बदमाश है, कोई कम बदमाश है, कोई ज्यादा हेराफेरी करता है, कोई कम हेराफेरी करता है। लेकिन वोटर बेवकूफ बनता रहा है और बन रहा है और बनता रहेगा जब तक कि आप संविधान को नहीं समझेंगे और आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आप बेवकूफ हैं। हमें किसी नेता से क्या लेना देना है, हमें पहले अपने माइंड में ये चीज रखनी चाहिए। बनना है तो आप बनिए, कोई रोकता नहीं आपको नेता, आप चाहिए आगे बढ़िए, आप भी नेता बनिए, बनने के मजे लीजिए, आपको भी वोट मिलेंगे। लेकिन आप हिम्मत नहीं, मत रखिए हिम्मत, कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं चाहिए आपकी। हमें देश चाहिए, हमें देश के संविधान का पालन चाहिए, हमें प्रेम्बल्स को पालन करना है यहाँ का, हमें हमें अपनी ड्यूटीज को पालन करना है यहाँ का। अपने अधिकार लेने हैं तो ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। लेकिन नहीं करेंगे हम एक ही राष्ट्रीय भक्ति के नाम पे किसी प्रधानमंत्री की भक्ति करेंगे, किसी दूसरे भक्ति लीडर की भक्ति करेंगे, राष्ट्रीय भक्ति कहेंगे, शोर मचाएंगे, समझे नहीं, बिल्कुल नहीं समझेंगे। ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं वोटर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, जो दुकानें हैं, कुछ बैठा दिए जाते हैं फेसबुक पे, कुछ बैठाते जाते हैं कहीं और, तो उसी की ही बातें करते रहते हैं, दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, और वहाँ दूसरे की बातें करते रहते हैं, इसको बुरा कहते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं रहा। वोटर उल्लू बना है, बनता रहेगा जब तक आप समझेंगे कि वोट का मतलब क्या है। वोट का मतलब मतदान नहीं है, आप दान नहीं कर रहे, आप अपना अधिकार उसको दे रहे हैं। जिस तरह किसी कंपनी में अधिकार दिया जाता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को, जीपीए बोलते हैं जिसको, एसपीए बोलते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वो चीज जब तक आप नहीं समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेंगे कि हमारा संवैधानिक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने जिसको अपॉइंट किया वो हमारे लिए काम करे, और उससे पूछे कि तुमने क्या काम किया, बताइए साहब, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम योर ऑनरेबल कहेंगे, लेकिन आप बताइए तो सही आपने क्या किया है। वो कभी बताएगा नहीं आपसे, तो आएगा भी नहीं आपके पास। तो इस वोट का मतलब क्या, आपको सोचना चाहिए वोट आखिर क्यों देते हैं। ठीक है, हम देते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अधिकार कहाँ है, ये पूछने का उससे जिसको हमने वोट दिया कि आप बताइए आपने क्या किया या क्या करेंगे। हम कभी नहीं पूछते किसी से, पूछेंगे तो जब वो हमारे पास आएगा। कोई साहब कहते थे जितने आदमी तो कैसे हैं, तो भैया मत आओ ना, आप नहीं मिल सकते तो किसने आपको कहा है कि आप आइए, मतलब लड़िए इलेक्शन कौन रहे आपको। हमें पूछने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए अगर देश को सुधारना है। नहीं तो ये ऐसे ही दुकानें चलाएंगे, अपनी राजनीतिक इंडस्ट्री चलाएंगे, और हम इनके उद्योग में पागल की तरह वोट देते जाएंगे। इनको तो 10% वोट मिले, 5% वोट, इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ जीतने से मतलब है। फर्क हमें पड़ता है, देश हमारा है, राजनीति का नहीं। राजनीति नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है, पढ़ के देख लीजिए, कहीं कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात नहीं कही गई है, कहीं लिखा नहीं गया कि प्रधानमंत्री देश का राजा है, कहीं लिखा नहीं गया संविधान में कि प्रधानमंत्री को अपने चुनना है या किसी मंत्री को चुनना है, कहीं नहीं लिखा गया आपने राष्ट्रपति को चुनना है, कहीं नहीं लिखा है। सब कुछ संविधान में कोई बता दे कहाँ लिखा है, कोई वकील बता दे, कोई जज बता दे कि कहाँ लिखा है संविधान में ऐसा, आप तो पढ़ेंगे नहीं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। संविधान में तो पार्टियों का नाम भी नहीं लिखा है। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री कौन है, बस एक मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सबसे ऊपर बैठा है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, बताता है कि क्या हो रहा है देश में। प्रधानमंत्री की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखी, किसी मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं लिखी, तो फिर क्या है इसका मतलब, हम समझें, हम समझाएं क्या है। ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है, क्योंकि संविधान हमने बनाया है, भारत की पब्लिक ने बनाया है, ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उस टाइम नहीं लिख पाए तो हम अब तो समझे, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें करने की आवश्यकता है। कई बार लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जो कहा जाता है वो होता है। आप वोट देते हैं, वोट का मतलब जब तक नहीं समझेंगे, आपका एक कागज का टुकड़ा जो आपने दे दिया पहली चीज, वोट एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वोट आपका अधिकार है जो आपको स्वयं यूज करना चाहिए था।
क्योंकि 140 करोड़ लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते और ये सब पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। इसलिए हमने कुछ मिलके आदमी को बनाया, तुम मेरे बन जाओ और जाओ हम बैठ के मेरी तरफ से बात करो, इस एरिया की तरफ से बात करो। उसको कहा जाता है इलेक्टेड, जिसको कहते हैं ये पूरे एरिया के लोगों ने इसको चुना, उस एरिया के लोगों को वोटों को इलेक्टेड कहा जाता है। इस इलेक्टेड ने इस आदमी को चुना एमपी बनने के लिए या एमएलए विधायक बनने के लिए। इतनी बात हमको समझ आनी चाहिए पहले। छोटे से छोटा हो, अनपढ़ गंवार हो, पढ़े से पढ़ा लिखा हो, चलो छोटे की मैं बात नहीं करता, जिसने स्कूल कॉलेज नहीं देखा मैं उसकी भी बात नहीं करता, पर मुझे गुस्सा उस पर आता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विद्याधारी हैं, ज्ञानी हैं, अपने आप को विशारद कहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, उत्तरौत और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि बहुत से लॉ वाले भी, नियम जो समझते हैं, जो कानून समझते हैं, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं वकीलात की, इंजीनियर, डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी हैं पढ़े लिखे वे लर्नेदवान विद्वान लोग, वो भी तो नहीं जानना चाहते। दुख तो इस बात का होता है। तो जब ये जानते हैं हमारे देश के ये नेता, ये क्रिमिनल सारे जानते हैं कि हमारी जनता की माइंडसेट क्या है, हमारी जनता क्या सोचती है, इसीलिए इस बात की चिंता नहीं करते, अरे यार हेरा फेरी करके कैसे ना कैसे हम ये वोट ले ही लेंगे। और हमारा तो फॉर्मूला है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है ये हिंदू की पार्टी है, ये मुसलमान की पार्टी है, ये हमें 15 लाख देती है, हमें 2 करोड़ रोजगार देती है, ये मुझे फ्री मकान देती है, या ये पार्टी मुझे फ्री पानी देती है, बिजली देती है, ये मुझे ज्यादा पेंशन देती है, या मेरी सड़क, ये जो क्या करते हैं, इन बातों को सोचेंगे हम, भावना में बह जाएंगे हम। भावनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। आपकी रिश्ते के लिए अच्छी हो सकती है, माता पिता के रिश्ते के लिए, भाई बहन के रिश्ते के लिए, वो व्यक्तिगत तरीके पर होती है, लेकिन ये भावनाएं जब देश में आ जाएं तो वो देश की बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता, वो बर्बाद होकर ही रहेगा। क्योंकि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, भावनाओं से अंधविश्वास चलता है, भावनाओं से कैलकुलेशन नहीं चलती, भावनाओं से अफीम चलती है, भावनाओं में दुनिया नहीं चल सकती, दुनिया समझदारी से चलती है। जो भावनात्मक होगा वो समझदार कभी नहीं होगा, वो बात को तोड़ फोड़ के नहीं देखेगा, वो बहता रहेगा उस नदी के भाव में, जो भाव जाके कहीं समुद्र में घुस जाएगा या संगम में घुस जाएगा, उस नदी के भाव में बहेगा। इसलिए भावनाओं को अपने काम में मत लाना, अपने रिश्ते में बेशक लाओ, वहाँ भावनाओं की जरूरत होती है, लेकिन जहाँ देश का सवाल है, जहाँ समाज का सवाल है, जहाँ प्रोफेशन का सवाल है, वहाँ भावनाएं काम में नहीं आती हैं। भावनाओं में माइंड नहीं होता है, भावनाओं में बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए भगवान ने माइंड भी दिया है ताकि माइंड उसका एनालिसिस कर सके, उसको तोड़ मोड़ के पृथक करके देख सके आखिर इसमें क्या छिपा है। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप भावना में बहेंगे, ये सक्सेस होते रहेंगे। सारे के सारे नेता जो बैठे हैं आज की तारीख में, अपने को हम जिनको नेता कहते हैं, वो लोग चोर, लुटेरे, बदमाश, दुकान वाले, उद्योग वाले, 5 स्टार होटल वाले, वो सब इस देश के क्रिमिनल्स हैं। आधे से ज्यादा आज की तारीख में क्रिमिनल्स हैं। आप भी लोगों की आशीर्वाद से 233 क्रिमिनल आपने 545 वाले लोकसभा में पहुंचा दिए। और देखिए यहाँ तो अभी इलेक्शन में क्रिमिनल ही क्रिमिनल नजर आ रहे हैं। तो इसका उत्तरदायी कौन है? मैं प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार नहीं मानता, वो दूसरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार हम हैं। हम मत अधिकारी, हम इस देश के वोटर, भारत के सब बड़े घमंड से कहने वाले हम वोटर, वो 18 साल का बच्चा इसका जिम्मेदार है जो वोट देता है, और सबसे बूढ़ा भी जिम्मेदार है जो वोट देता है। इनकी बकवास सुन के, इनकी बकवास सुन के मैं सीधे कहूँगा, ये बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं करेंगे। एक बार वोट इनका मिल जाए, उसके बाद दूसरी बार भी आपसे ले लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। इनको सबको भावना में बहाना आता है, सब पार्टियों को भावना में बहाना आता है, और हम बह जाते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इनसे हम प्रश्न नहीं करते। और जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, इनकी खाट नहीं खींचेंगे, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। अफसोस तो मुझे उन बिके हुए लोगों को भी होता है जो कहने को तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, टेलीविजन चैनल वाले हैं, कि वो सारे के सारे कुत्ते बन चुके हैं आज की तारीख में। उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उनकी नौकरी चलनी चाहिए, और उनके मालिक जो बैठे हैं, इन्हीं राजनीतिक नेताओं के लोग बैठे हैं। तो किसको क्या करें यहाँ पे? लेकिन वोट तो जनता का है। कहने को हम पीपल हैं भारत के, वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इस देश को, इस संविधान को बनाया है, और हमारी शक्तियां जो इस संविधान में है, वो है हमारी शक्ति प्रभु सत्ता संपन्न होने की, समाजवादी होने की। ये शक्ति है हमारी, आप भी कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष होने की, लोकतंत्र होने की, और
और से गणतंत्र होने की ये शक्ति हमने जरूर ली है और गारंटी से ली है कि हम इसको समाज में इससे इंसाफ कराएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे और इससे पता नहीं स्वतंत्रता में क्या क्या देंगे, बराबरी देंगे, जिससे कि भाईचारा पैदा होगा। ये सब बातें लिखी हैं, कहानियां हैं, एक तरह की एक कहने को ख्याल है, लेकिन कितने परसेंट आपको हुआ अब तक, बड़ा प्रश्न उठता है। ये प्रश्न आप जब तक नहीं सोचेंगे आप एक सक्सेसफुल मत नहीं यूज कर सकते, आप एक समझदारी से अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। आप करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, बार बार जाते हैं, लाइनों में लग के आगे अब विक्ट्री साइन दिखा देते हैं, देखो मैं वोट देके गया, कुछ फायदा नहीं है उस वोट का। एक ख्याल है कि हम देखे आ गए, एक भ्रम की दुनिया में हम रह रहे हैं और ये भ्रम इन नेताओं की दुकान है, ये भ्रम इन नेताओं की प्रॉपर्टी है। हम जब तक भ्रम में रहेंगे, जब तक हम भावना में रहेंगे, इन नेताओं की दुकानें चलते रहेंगे बिना किसी पढ़ाई लिखाई होने के। कहने को वो चाय वाले होंगे लेकिन लुटेरे होंगे, देश को लूट के खा जाएंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहेंगे, फिर भी आप उनको वोट देंगे क्योंकि आप बेवकूफ हैं। होंगे आप पढ़े लिखे, होंगे आप अनपढ़, लेकिन आप वोट का मतलब नहीं समझते। सारी दुनिया समझती है कि आप नहीं समझते। जहाँ वोट की इतनी वैल्यू नहीं है, जहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं है, वो समझता है। इटली समझता है, लेबनान समझता है, इजिप्ट समझता है और हांगकांग समझता है और वेनेजुएला समझता है और पता नहीं कहाँ कहाँ समझते हैं, अरब में सब समझते हैं। लेकिन जहाँ ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है भारत देश में, वहाँ इसका मतलब नहीं समझते, इसका एब्यूज होना समझते हैं, इसकी बदतमीजी समझते हैं। ये मतलब है। कोई मतलब ईवीएम से जीतना चाहता है चीटिंग करके, पहले रिगिंग से जीता जाता था। लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई जीतना नहीं चाहता। हमारे देश की समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं सच बताऊं तो हमारे यहाँ समस्या ही नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है। हमने समस्या सारी बनाई हुई है। हमारा देश एक अमीर देश रहा है, जहाँ पूरी नेचुरल वेल्थ हो, प्राकृतिक पूरी हो, जहाँ बिजली पानी सब कुछ हो सकता हो, जहाँ खाने की प्रॉब्लम ना रही हो, जहाँ खेती में कमी ना हुई हो, जहाँ पानी की कमी ना हुई हो। वहाँ समस्याएं आने का मतलब नहीं होता है, लेकिन आ रही हैं समस्याएं। हमने गरीब कहलाते हैं कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन हम बन चुके हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं समझते हम आगे नहीं निकल सकते, ये गारंटी है। हम आगे निकलना भी नहीं चाहते, ये भी गारंटी है। हमें शर्म आती है आगे बढ़ने में, हमें जलन होती है मैं क्यों आगे बढ़ूं, या ये जलन होती है वो क्यों आगे बढ़े, मैं क्यों ना बढ़ूं। इस ही लड़ाई में हम अपना नुकसान करते जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि समुद्र 4 किलोमीटर गहरा होता है और सागर 10 किलोमीटर गहरा होता है। हम उसमें ना गिर जाएं, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। फिर आपको अगर आप समुद्र में जाकर घुस गए नीचे, फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। उस समुद्र को ना पहुंचे आप, उस समुद्र के ना गिरे आप, तो आपको वोट का मतलब समझना होगा। ये मत अधिकार किस तरह प्रयोग किया जाए ये समझना होगा, क्योंकि आप समझते नहीं हैं। भारत का जो संविधान है वो कहता है आपकी कर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको ये काम करना है। आपको भारत के संविधान को मानना है, आपको इस देश को विज्ञान की तरफ लेके जाना है, आपको इस देश को प्रगति की तरफ लेके जाना है। आपका काम है बात को समझ के दिमाग का इस्तेमाल करें, यहाँ की शक्ति का, यहाँ के नेचुरल हेल्थ का ध्यान कीजिए। और जो हमने जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई की, युद्ध किया एक तरह से अंग्रेजों से, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उनको कैसे आगे चढ़ाएं, ये जरूरी है। बैठे होंगे आज उस दूसरी दुनिया में हमारे लोग, चाहे वो स्वतंत्र सेनानी हो, कितने भी हजारों हो, वो हंस रहे होंगे हम पे कि इन बेवकूफों के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया था। कहाँ किसके लिए किया था, सब कुछ हमने कुर्बान किया। हम भी इनकी तरह ऐश करते, खाते पीते, हेरा फेरी करते, लेकिन हमने सोचा हमारे आने वाली हमारी संतानें, आने वाली जनरेशन, आने पीढ़ियां बहुत अच्छा रह सकेंगी। इस देश को, इस देश की संपत्ति का यूज करेंगे, दूसरे ना यूज करेंगे, ये सोचा होगा उन्होंने। लेकिन वो हंसते होंगे आज के किन के हाथ में, इनके लिए हम क्या करके आए, हमें दिख नहीं पाया उस टाइम भी किस तरह के लोग यहाँ पे होंगे। है वो एक कल्पना है, वो क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे, वो तो मैं ख्याल थोड़ा बीच में आप बोल रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन सवाल वही उठ जाता है, वोट का मतलब समझिए। नहीं तो ये लोग आपको 500 साल तक ऐसे ही गुलाम बना के रखेंगे। सच मायने में कहूँ तो हम गुलाम ही हैं। अंग्रेजों की गुलामी थी, गई, उसके बाद ये गुलाम आ गए सारे, जिसको हम काले अंग्रेज कह सकते हैं। इनके अपने हैं, एक संविधान लिख के दे दिया, बस जाओ। संविधान लिखने से खाली कुछ नहीं होता है। संविधान लिखने वाले ने भी कहा होगा संविधान लिखने से कुछ नहीं होता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन चलाना आपने है। यही किताब है, आप इसको फिजिक्स के रूप में पढ़िए, केमिस्ट्री के रूप में पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, जैसा पढ़ेंगे वैसा समझेंगे।
प्रिंसिपल्स मैं दे रहा हूँ आपको, सिद्धांत मैं दे रहा हूँ आपको, आपको रास्ता मैं बता रहा हूँ, अंधेरे में रास्ते में आपको चुनना है, अंधेरे से बाहर कैसे आना है आपको चुनना है। आर्टिकल जो लिखे इसके अनुच्छेद लिखे इनको आपने क्या समझना है, आपको सोचना है, मैंने नहीं सोचना है। मैं तो मर जाऊंगा उसके बाद यूज आपको करना है, आप भी मर जाएंगे, आपके संतानों ने करना है, लेकिन आप इसको नहीं ढंगे से पढ़ेंगे या नहीं करेंगे तो ये अध्ययन की किताब है, कोई पूछता नहीं इसको। अगर आप समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते तो क्या फायदा इस किताब को पढ़ाइए। आप आपने उसी के कहने पर चलना है जो सीट के ऊपर बैठा है कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं ये करूँ, बेवकूफ बनाता जा रहा है, बेवकूफ बनता जा रहा है। कोई भी बैठा ऊपर से तो मतलब नहीं मुझे, पुराने जैसे मैं 71 से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ न्यूज को, उसके बाद जो हुआ, हम बेवकूफ बनते रहे, ये बेवकूफ बनाते रहे, और अब भी बन रहे हैं, आप बड़े बेवकूफ बन रहे हैं। हमारे सामने हमारे देश को बेच दिया जाए, हमारे पैसे को बर्बाद कर दिया जाए, लूट के कोई ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, तो किस लिए संविधान बनाए? हजारों करोड़ लूट लेट के जाएं, कोई बात ना हो उसकी, कोई रिकवरी ना हो उसकी, मेरा बैंक का पैसा मुझे ना मिले, मेरे देश की शक्ति मुझे ना मिले, हम लोगों को जॉब ना मिले, हमारे उद्योग बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, और फिर हम खुश हों, हम मोदी 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 मोदी, ओम नमो मोदी, ओम नमो राहुल, यही करते रहेंगे हम। अरे हमसे अच्छे कुछ कुत्ते होते हैं, हमसे अच्छे बिल्ली होते, गाय भैंस होती हैं, अपना खाना ढूंढ के आराम करती हैं। हमने क्या ढूंढा? अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, बहुत कुछ समझने लगते हैं, उसके बाद ये हरामी साले के साले हमारी जिंदगी छीनते हैं हमसे, हमारा पैसा छीनते हैं हमसे, हमारी मेहनत छीनते हैं हमसे, हमारा वर्तमान छीनते हैं हमसे, हमारा भविष्य छीनते हैं हमसे, और हम उनकी आरती उतारते रहते हैं, आरती। और इससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी? इसे बेवकूफी कहते हैं आप? बेवकूफी कोई डेफिनेशन है? संविधान को पढ़ते नहीं इनको फायदा होता है, ये चाहते हैं कोई ना पढ़े, कसमें संविधान की खाते हैं, संविधान जानते नहीं है, शर्म आती है मुझे। क्यों कसम खाते हो आप इन्हें खाने क्यों देते हो? कसम खा रहे हैं संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को चलाएंगे, किसी के साथ गलत काम नहीं करेंगे, किसी को गलत फायदा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फालतू की बकवास, भगवान के नाम में बकवास, और उसके बाद 2 मिनट की संविधान की शपथ और 5 साल ऐश, पब्लिक बेवकूफ। तो क्या प्रश्न का उत्तर, पर उस उत्तर क्या है इसका? क्या करना चाहिए? ये आपको सोचना है। इनके लिए संविधान कुछ मीनिंग नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, और आपके लिए भी नहीं रखता। ना वो सीरियस है और ना आप सीरियस हो, तो कौन सीरियस? कोई भी सीरियस नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। वो संविधान बेकार है क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे उसको। वो एक बुक जो आपको इतनी मेहनत से लिखी गई, उन लोगों ने लिखी जिन्होंने आजादी के लिए काम किया, उन्होंने सोचा कि भविष्य चलेगा अच्छा, सही रास्ते पे जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। There is no value at all. You are not serious people. You are a sleeping society. आप समझते नहीं वोट कैसे देना है किसी को? अरे दे दो ये राष्ट्रपति, ये मोदी अच्छा रहेगा प्रधानमंत्री, कांग्रेस वाले को दे दो, रानी को दे दो। शुरू से यही चलता है, मेरी भावनाएं भड़काओ, मेरी चाय ले जाओ, मेरी भावना भड़काओ, मुझसे बोतल ले जाओ, मुझसे वोट ले जाओ। उनका खाना है वोट, आपसे वोट खरीद रहे हैं बिना पैसे, आपको लालच देंगे, अब ये कर देंगे, मकान दे देंगे, फिर आपको पानी का बिल कम कर देंगे, बिजली का बिल कम कर देंगे, हम आपको 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये साल का दे देंगे। कोई कुछ कहना चाहता है, किसी ने 15 लाख का वादा किया था कि आपको मिलेंगे, किसी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम कुछ ये देंगे, हम कुछ वो देंगे, 370 में आपको घुसा देंगे, आपको यूनिवर्सल कोड में घुसा देंगे, आपको 3 लाख में। आपकी भावनाएं भड़कनी चाहिए बस। आप हिंदू हैं तो बड़े हिंदू बने, आप मुसलमान हैं तो मिट जाएं, आप सिख हैं तो ये करें, आप वो। इनके माइंड में इसके अलावा कुछ नहीं। ये भारत के नागरिक को नहीं जानते, ये भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जानते हैं, ये भारत में जातिवादियाँ जानते हैं, ये ब्राह्मण कौन है, ये बनिया कौन है, ये शूद्र कौन है, ये चीजें ये जानते हैं। ये भारत को नहीं जानते, ये भारत को हिंदू के नजर से देखते हैं, ये भारत को मुसलमान की नजर से देखते हैं, ये भारत को जातिवाद की नजर से देखते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते और आपका वोट खरीद लेते हैं। इनका एक ही जिंदगी का मकसद, जिंदगी में क्या चाहते हैं? आपका मत मिल जाए इनको, उसके बाद भाड़ में जाओ, आप भाड़ में जाओ सब। हमारी दुकान चलनी चाहिए, हमें क्या लेना आपसे? अरे होंगे आप वोटर यार, जाओ भाड़ में जाओ, बहुत देखिए 5 साल फिर सेट कर लेंगे आपको। आप बह जाते हो, हम जानते हैं आप होना बह जाते हो, तो बहते रहो। कोई बीजेपी का पक्तू बन के बैठता है, कोई कांग्रेस का पक्तू बन के बैठता है, क्या लेना है आपको इनसे? मेरे को तो बात समझ नहीं आती, क्यों बनते हो आप बीजेपी या कांग्रेस के? आप एक आम क्यों नहीं रहते? इनसे काम लो, ये नौकर है हमारे, पैसा देते हैं, पैसा फ्री नहीं लेते काम। बड़ी बड़ी कारें चाहिए पीएम को, बड़े बड़े बंगले चाहिए, बड़े बड़े सेफ्टी गार्ड चाहिए, ओ एसपीजी चाहिए। किस लिए चाहिए? क्या डर है भाई तुम्हें? हम इस देश में, आप इस देश में, किसका डर है? लेकिन नहीं,
हम प्रधानमंत्री हैं, हम मंत्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, भाड़ में गए तुम सब। अरे सिटीजन का क्या, उसकी रक्षा कौन करेगा? औरतों की रेप हो जाए, लड़कियों की रेप हो जाए, उसकी आपको चिंता नहीं है? कोई चिंता नहीं उसकी आपको। कश्मीरियों को मार दिया जाए, बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए, उसका कोई चिंता नहीं है। फालतू की बकवास कर रहे हैं। लोगों की भावना कैसे भड़कते हैं, बस आपको एक ही काम आता है। आप दिन भर रहते ये देखते हैं कि लोगों की भावना कैसे भड़के। क्या कौन सा पॉइंट सामने लाए जाए कि लोग भड़क जाएं? कब तक? ईवीएम से भी आप कब तक जीतते रहेंगे? एक दिन ईवीएम को भी तोड़ दिया जाएगा, तब क्या करेंगे आप? पब्लिक है ये। पब्लिक आपके भावनाओं से भड़क सकती है तो अपनी भावनाओं से भी भड़क सकती है, ये मत भूलना। जब पूरा गिलास भर जाता है तो पानी बाहर आता है। परमानेंट आप भी नहीं उस दुनिया में, याद रख लेना। आपका नाम कोई नहीं लेगा अगर आप भावनाओं में बहेंगे तो। पब्लिक है, मासेस है, बह जाते हैं। क्योंकि हर आदमी को आप एक लेवल का नहीं समझ सकते। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी के पास बहुत कुछ है। आपके बाप ने ये देश नहीं बनाया था, याद रख लेना। ये देश पब्लिक का है और पब्लिक इसकी मालिक है और रहेगी। हाँ, बेवकूफ बन जाती है, मानता हूँ। अब वोट का मतलब समझना बहुत जरूरी है पब्लिक को। ये वोट आपको, आपके देश को बना भी देगा, आपके देश को तोड़ भी देगा, याद रख लेना। ये वोट बहुत बड़ी दवाई है। इसमें पॉइजन भी है और इसमें केमिकल एक्टर भी है, दोनों है इसके अंदर। आपको क्या चुनना है, ये आपको देखना है। ये जहर भी है, ये दवाई भी है। ये वोट सोच समझ के देना चाहिए, अंग भक्ति से नहीं। अंधे हम मोदी को ही देंगे यार, भाड़ में आएगा तो मोदी ही या आएगी तो इंदिरा ही, ना, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा। आएंगे हम जिसको चाहते हैं वो आएगा। एमपी हमारा वो आएगा जिसको हम चाहते हैं, तो लात मार के भगा देंगे, हाथ तोड़ के भगा देंगे। इतनी शक्ति होनी चाहिए हमें सोचने की, हमें प्रश्न करने की काबिलियत होनी चाहिए। हमें सर इतना होना चाहिए कि बोल तुम क्या करोगे इस देश के लिए, बताइए, व्हाट शैल यू डू फॉर दिस कंट्री, गिव मी अ प्रोग्राम। Is someone ready for that? Are we ready for that? If you cannot understand this point, what can we understand? We are foolish voters of this country, and we have made this country foolish. We are illiterate society. We are a sleeping society, nonsense society. Despite of having very high degrees of education, we are not able to analyze our requirements. We are not analyzing what we should do. We are just going for sake of voting. That's it. My vote is there. See, we sign. Hell with your sign. You think of what first, what vote is. This is the root of this tree which you are having. ये पेड़ है, जड़ है वोट। इस वोट के अंदर सींचा जाता है, वो वोट है जो आपको ट्री देगा, ट्रंक देगा, सैप देगा, लीव्स देगा, ब्रांचेस देगा, फ्रूट देगा। लेकिन जब वोट ही गलत हो, सब गलत आएगा, पतझड़ बन जाएगा, सूख जाएगा पेड़, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपकी कंट्री बेच दी जाएगी आपके सामने, आपका सिस्टम बेच दिया जाएगा। आप देखते रहना, हंसते रहना, नाच करते रहना, पटाखे चलाते रहना। गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, शर्म आ रही है अपने आप में कि मेरे समाज कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं इस देश के लिए, जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया इसके लिए। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और बनते रहेंगे जब तक वोट का मतलब नहीं समझेंगे। आपका वोट कोई दान नहीं है, आपका वोट आपका अधिकार है। अधिकार दे रहे हैं आप उसको, तो आप पूछने का हक रखते हैं। दान देने के बाद हक नहीं रखा जाता, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ये आप डेलीगेट कर रहे हैं अपने अधिकार को कि चाहिए मिस्टर, आप एक काम कीजिए, मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे समाज की प्रॉब्लम्स को, मेरे राज्य के सॉल्व कीजिए और अवार्ड दे के आइए कि आपने क्या किया। संसद में चाय पीने के लिए नहीं जाते आप, संसद में आप खाली थाली खाने के लिए नहीं जाते, आप ड्यूटी करने जाते हैं तो ड्यूटी करो। जो संविधान में लिखा है, जो मेरा हक है वो मुझे दिलाओ, नहीं तो हंटर मारूंगा, भगा दूंगा। जब तक इस तरह की सोच हमें नहीं आएगी, ये लोग राजा बने रहेंगे, राजा, और हम भिखारी बन रहेंगे। ए माई बाप, मेरा ये काम कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये कहना, ए आंसर आंसर रिस्पॉन्ड, आई पेड टू यू रिस्पॉन्ड। है आपका हिंदी मत बात करें। कभी पूछा आपने किसी कैंडिडेट से कि आप क्या करेंगे जाके वहां पे? नहीं पूछा आपने, वो आएगा ही नहीं आपके पास। जो कैंडिडेट आपके पास आ नहीं सकता उसे आप क्यों वोट देते हैं? जो आपकी सलाह के बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा, ये मेरी औकात क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ इस देश के लिए, मैं संविधान को कितना समझता हूँ, उसको आप वोट देते क्यों है? क्योंकि आप कैंडिडेट को वोट नहीं देते, आप उम्मीदवार को वोट नहीं देते, आप उसको देते हैं जो आपको उम्मीदवार ही नहीं है, जिसको आप जानेंगे नहीं, लेकिन वो सीट पर बैठ जाएगा आपके।
फिर आपको कहानियां सुनाएगा, मैंने देश में बिजली दे दी, मैंने देश में ये दे दिया, मैंने मेडिकल का ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। आपको इतनी कहानियां सुनाएगा जैसे बच्चों को सुनाई जाती है कि एक परी आई थी, वो ऐसे करके गई थी, सारा काम कर गई, सारी सफाई कर गई, वो चीजें बताएगा। झूठ बोलेगा, देखो मैंने इतनी जगह गाँव में बिजली दी थी, मैंने इतने गाँव में ये दे दिया, फौजियों के साथ जाएगा, वहाँ दिवाली मनाएगा, जबकि दिवाली के दिन ही वहाँ लोग मर भी रहे हैं, उनको नहीं पूछेगा। इस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। अपने दोस्तों को सब बेच दो, सब कुछ बेच दो, फिर कहना देखो मैंने कितना अच्छा कर दिया, आपके आपके डिले होने से आपको पैसा वापस मिल रहा है। ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो क्या है? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसे ही, पहले भी ऐसे थे। कोई कम है, कोई ज्यादा है, ये सिर्फ आपके वोट की वजह से, क्योंकि आपने वोट का मतलब नहीं समझा कि मत किसे कहते हैं। पहले समझ जाओ, अगर आपको इस देश को सही करना है, इस देश से भ्रष्टाचार भगाना है, इस देश के न्यायालय को ठीक करना है, इस देश की संसद को ठीक करना है, इस देश के सही राष्ट्रपति को काम करने देना है, इस देश के मंत्रालय सही होने चाहिए, इस देश की स्टेट असेंबली सही होनी चाहिए, जब तक नहीं होंगी आपका वोट सही कैंडिडेट को नहीं जाएगा, सही दुनिया को नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। चलिए, आप वोट सही देना सीख लीजिए, देख लीजिए जुडिशरी 3 महीने में साफ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और सरकार भी सही बन जाएगी। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्हें पता है कि वोट सही आदमी को दिया गया है, काम करने वाले आदमी को दिया है। जिसको वोट सही दिया जाएगा उसे पता है कि जनता समझती है वोट का मतलब। उस दिन मोदी की जरूरत नहीं होगी इस देश में। उस दिन वो आदमी आएगा जो ठीक कर देगा देश को, वो आदमी आएगा। लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि आपको मोदी से प्यार है, आपको राहुल से इकरार है या नहीं है, या किसी और से है कि नहीं है। वोट सही जाएगा तो ये सही आएंगे। भूल जाओ कौन प्रधानमंत्री होगा और भूल जाओ कौन चीफ मिनिस्टर होगा, जो होगा कोई तो होगा। आपको क्या लेना इस बात से? कोई ना कोई तो बनेगा। जरूरी है कि जिसको आप चाहें वही बने? कोई जरूरी तो नहीं है। बनेगा तो सही कोई, लेकिन नहीं, आपने भावनाओं में बहना है तो कोई हाव भावना गुलाम है। आपने भीख मांगनी है, भैया मेरे को ये दे देना, ले ले वोट। भीख नहीं मांगनी, अधिकार मांगना है। ये करेगा, साइन करके दे के जा, ताकि हम पूछ सके देखो भाई साहब आपने ये लिख के दिया था, क्या क्या बताइए। नहीं करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पे दम नहीं है। वोट आपको मिला, संविधान आपको मिला, एक दमदार कमेटी, दमदार अधिकारी, एक ऑथर, वो लिख के दे क्या संविधान आपका। लेकिन वो कुछ नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, उसका बंद किताब शेल्फ में रख दी। भारत का संविधान बस देखते रहो, खाते रहो, उसको पीते रहो और बोलते रहो संविधान ने बेवकूफ बनाने का हक आपको दे दिया। आप ये समझ लो, अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप इस देश को आगे चलाना चाहते हो, इस देश का भविष्य चाहते हो, अपना भविष्य चाहते हो, इसका निर्माण सही तरह से होने देना चाहते हो, तो वोट को समझ लो। वोट समझ लो। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड वोट, देन कुछ फायदा नहीं है कहने का। यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वोट, you understand how to vote, how to use this power. That day this country shall change, believe me. Completely automatic system will be fine, because PM shall be worried, all ministers shall be worried. Their people know now what to do. They know now what is vote, because till now we are viewing this vote from eyes of these politicians, not from through our eyes. You start understanding this vote through your eyes, through your mind. This vote shall be real vote. This shall not be infectious vote, fictitious vote. Till now it's only fictitious vote. Every vote is valuable, but based on calculations. You ask questions, all candidates whoever come to you, and if they don't come to you, hell with them, throw them out. Why don't you come to us? If you want to, tell us what you want to do. If you're not coming, just waving, then we are also waving bye bye. What say road show? Wave, Rahul Gandhi waving, Modi is waving, as they'll stand like this and what this? No, 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 this means that. Come and sit with us, discuss with us. I don't want this, or this. No, I don't want this, I don't want this. I want this. Can you do that? Know this, and know this. Only this. Use it. Forget BJP, forget Congress, forget everybody. Consider person to whom you vote. And this country will be set right, believe me. And you shall also be standing. You shall be contesting. You shall be working with them. What's happening now? Neither you have 10 crores to pay to party to get ticket,
Neither you have 25 crores to pay to party to get ticket. How can you come in politics? Impossible. You are not Tata Birla. You are not Ambani. You are not Adani. You are a simple person, but constitution gives you right to election. Get elected. How? If you can elect it only through independent status. So independent must be valued. Public should understand requirement of independent people. You should float your candidates, or you should yourself come. And public should trust you. You should tell them what we're going and do this. Forget politicians. Forget political parties. Forget who shall be PM. Forget who will be CM. Just think MLA who shall be and MP who shall be. That is important. Check, just like we check work. Check every candidate. Candidate should give you his CV. This is my CV. His CV should come to all voters. Let them decide. Nothing happens. Nothing happens. Where does democracy stand? Where is democracy? I don't know my candidate, I vote. It's not correct. Principally, it's wrong. Without knowing your candidate, you're voting. You're voting. You're foolish. You're voting for prime minister who is not your candidate. Why you're voting such person? You vote your person to whom you want to be there in house. This point we are unable to understand. It has been more than 7 decades, but we have not been able to understand this point, and this is root cause of problem that we are not able to achieve success for this nation in system. Constitution must be valued. It must be understood. Who is asking you to read all Constitution? Just understand relevant articles. For example, Article 74 is there, Article 81 is there, Article 1 is there, fundamental rights are there, union and state rights are there, concurrence. If you understand that one, that's enough. You can raise question to your MP candidate. Do you know what is union list? Do you know what is concurrent list? You can ask your MLA candidate, do you know what is state list? Do you know what is concurrent list? Even if they don't know that, don't vote them. If a person knows nothing, what shall you do in that house? Tell me. I don't understand a junior position of junior engineer or a doctor or some other position that requires knowledge. You cannot be elected for that position if you do not know knowledge, if you don't have that much. Then why, if that small position attracts so much criteria, what about this highest position of member of parliament of Lok Sabha, highest position in the constitution? Because that person is empowered to elect prime minister, that person is empowered to pass no confidence against prime minister, that person is empowered to impeach Supreme Court judge, that person is empowered to elect president, vice president. What else you want? Isn't higher? You have to understand all this. Don't go behind any political party. That day when you don't go behind this political party, you believe me, 50% of politics shall be clean. When you ignore these political parties, they know public cannot do this. Because they create problems for all. They use division politics. They don't use public integrity politics. Nation integrity, no, public should have integrity. They sections people. You Hindu, you Muslim, you SC, you ST, you this and you that and this and that, and they abuse you. You are farmer, you are this, we give you that. They give you as if they are, you're begging. They allow you like you're begging them. Your money, they think you're begging, you're asking them. Well, this is our system. You know this. So I'll jump further. Kashmir issue, very current issue and everyday issue. 85 days of war. These people are under arrest till now. They may say they are free, may say, but these people are conducting civil disobedience, which you know what civil disobedience, avamanna, adesh ki avamanna. We don't accept your orders, what you say. We'll do ourselves. We reject you, and they particularly rejected us. Peculiarly rejected us. They don't care for what you say. They don't care what governor says. They don't care for government things. They don't care for army things. This is called civil disobedience. Civil disobedience means do whatever you want to do. We don't care for you. We'll stay ourselves. We'll rather die than beg. We'll rather die than touch your feet. This is policy they are adopting. Unfortunately,
As I talked about constitution as a votes right, this also right power of people of other parts of country, non-JK people. We, as collective society, integrate people. Unfortunately, they don't support them. We should have extended our arms to them, but we did not do that. And this is not good. This means we, people of this country, do not respect those peoples, do not consider those citizens as our brothers and sisters. This is evidently true. You may accept it, you may not say that. I don't know what's the reason behind that. Why this state has come to this level that we ignore those people. They should not have been ignored, but they are ignored. Maybe few people only talk of them, and in general, 99% people in this country are with government, which is a criminal one in this instance. Government has no such right to do what they have done, abusing our defense forces, because this is not duty of defense forces to war on our own people. It's a war. Really, it's a war, undeclared war. What is war otherwise? Only thing is they are not openly killing them. That's it. Otherwise, suppression of rights, suppression of your rights and your privileges, suppression of liberty power, suppression of freedom power, all have been captured by military, and that is not duty of our military. You may feel bad about it, but this is a fact. This is not job of military, and our government has abused them. And this only way military can be exploited, can be polluted. It's not good. Whatever we have done for Kashmiris is not acceptable. Forget 370 and forget anything. Humans are humans, citizens are citizens, rights are rights, and privileges are privileges, which we have condoned, overlooked. And I hold all those people responsible, government people, officers, and our society, our public, all are responsible for this. I don't know what they achieved, believe me. I don't understand. I don't understand what we have achieved by this act, wrong act, parliamentary, you can say, miscarriage act, what they understood, what we have got benefit of, what we achieved by this, I don't accept earning bad reputation, that we have suppressed human rights, we have suppressed their liberty, we have suppressed this Kashmiris' freedom, and we have not understood what we should have done. We took a wrong step, we don't know how to go further. Those people are not happy with us, Kashmiri people. They are not interested in with us to stay with us. They say we have diversed this country. This country doesn't belong to us. They say that way. I don't understand what was need of this step, believe me. And maybe you people are not understanding, but you have to think on that. I cannot force you to accept what I'm saying, but you have to think for that. Because ultimately, it is your land. It was your land. This land didn't belong to you originally, but land is a part of this country, and we should have a proud of that, but we are not. We just try to cut their heads, behead them, virtually, and we beheaded them, and then they are claiming on them. Whole world knows now what we have done. They are not speaking because of many reasons. There is no peace anywhere involved. Americans came. Now again, European came. Europeans coming now. 30 Europeans now. NGO type people are coming. It's not official. They're not official people, but they're coming to Kashmir. Why should we involve ourselves in such useless and we can say resultless topics? Means, okay, I talked about rights and votes, but this is also bigger one. My question is, 85 days are over, fine. 85 days are over. How many days more can we keep? Shall we keep them forever? They say that last simple. We divorce here, and after talaq, we never talk. They consider this way. And what way do we consider? We have to know that. कश्मीरियों को जो किया हमने 370 जो हटाई हमने, हम खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, होते रहिए, कोई बात नहीं है. डू यू नो 370? यू डोंट नो 370. जानते आप नहीं, पढ़ा आपने नहीं. जब वोट का मतलब आप नहीं जानते तो 370 कहाँ से जानेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप नहीं जानते, कश्मीर का संविधान आप नहीं जानते, यूएन रेजोल्यूशन आप नहीं जानते,
शिमला समझो तो आप नहीं जानते, आप श्योर हो जाते हैं कश्मीर 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 कश्मीर, बस 370 370 370 370, यू डोंट नो व्हाट इज 370। मतलब आपका एक ही था कि हम आज जमीन नहीं खरीद सकते, इसीलिए सब कुछ प्रॉब्लम है। यही आपकी एक प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई प्रॉब्लम थी आपकी। और क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके लिए उसके लिए इतना बड़ा कांड कर दिया जाए, ये 370 को हटा के फेंक दिया जाए, ताकि वो कानून जिसके थ्रू हमारे पास आए उसको ही फेंक दिया जाए। अब सोचिए थोड़ा, 370 370 instrument of accession, Jammu and Kashmir Constitution, Shimla Agreement, UN Resolution, Delhi Agreement, and more and more and more and more and more. We did not understand them. We do not want to conduct their studies. We say these are all over. 370 has gone, corresponds to instrument accession has gone, corresponds to Kashmir Constitution has gone, corresponds to Simla Agreement has gone, and corresponds to UN resolutions gone. Everything is gone, and you say it is my Kashmir, it is my Kashmir. I don't know here something or no. Some analysis power is there or no, I don't know. A fourth class can understand if something with which they came and this paper is scrapped, that is also scrapped. We cannot understand this. We understand, but we don't know how to express. That's the thing. PM understands, but doesn't express. He wanted to play his politics and he played politics. That's it. And people were involved by that politics, and people were mental, sentimental. They were made mental, and they are mental. Still, they are mental. How many people have analyzed this? I'm sure none. None. No need. Because you believe in one person PM. Again believe. This is sentimental work. You are not analyzing. And that is why I say we are not scientific people. Scientific doesn't mean science education. Scientific means system you have to understand. You have to understand what is technique. You have to understand system. That you have to understand. But no, we will not. 1 crore people are destroyed. Their economy is destroyed, their society is destroyed, their education is destroyed, their economy and everything is destroyed, and we are then standing with heads up. You can mislead all nations, no problem. But what for? You can mislead whole world. But what for? Shall you get something from there? If they say, America say we are with you, Europe says we are within, what's the meaning of that? Have you resolved problem? Your client, your main stockholder in this case is public of J&K and no one else. Exclusive stakeholder is citizens of J&K, residents of J&K. They are stakeholder, none other. Until they say this is right, we agree with this, you are lying, you are a failure. Because you are not talking to person, aggrieved one, affected one, stakeholder, real person, real claimer. Your defense is absolutely wrong. You can bring anywhere somewhere about what does it mean? No meaning at all. No meaning at all. No meaning at all. No meaning at all. We cannot be fool ourselves forever. We cannot issue false statements to us forever. Documents speak, remember. Documents speak. You can spread misinformation, you can disseminate, just like people are doing. Many people I have seen doing on videos, they are telling misinformation to people about Kashmir, and this is from BJP party side. From the party. And there are other people who are explaining in the right way. Both are going on, but people are not at all listening. People are not at all listening. Oh, अच्छा हुआ, very good, very good, very good. अच्छा हुआ पर क्या हुआ, ये तो बताओ। अच्छा हुआ पर क्या अच्छा हुआ? ओ बस वो सब बराबर हो गए, पूरा देश बराबर हो गया, वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। अरे भैया कौन सा स्पेशल स्टेटस था, बताओ तो जरा। मालूम नहीं, स्पेशल था बस।
जब ऐसी बेवकूफ़ी पब्लिक में आ जाती है तो मोदी प्रधानमंत्री बनता है। जब 15 लाख मिलेगा की बेवकूफ़ी आती है तो मोदी प्रधानमंत्री बनता है। कोई नहीं पूछता कि 15 लाख से कितना फंड आएगा, कहाँ से आएगा, कितना बनेगा, कोई हिसाब नहीं लगाता है। बस मोदी ला देगा, हमें विश्वास है ला देगा। जब ऐसी आदतें लोगों में हो जाएं, ऐसे भ्रम सिद्धांत लोग सुनने लगें, ऐसी कविताओं को लोग विश्वास करने लगें, तो ये कविता ही तो है, नावल सी तो है। 15 लाख देंगे हम, कोई नहीं सोचा कितने पैसे बनेंगे। सब 100 करोड़ का लोग, 125 करोड़ के लोगों को कितना चाहिए? अरे 200 करोड़ करोड़ आया क्या? दुनिया में है भी क्या? हमारे देश का 20 करोड़ का बजट होता है, 20 लाख करोड़ का एक साल का बजट होता है। ये तो कह रहे हैं 200 करोड़ करोड़ आके देंगे। आप करोड़ करोड़ का मतलब समझते हो? एक करोड़ कितना होता है? 10 to the power 8 या 9 होता है। 10 to the power 7 कितना होता है? डबल कर दीजिए इसका। कहाँ से लाएगा पैसा वो? कहाँ से लाएगा बताइए आप? आपको